During this corona times, most of us have been through a lot, and corona time has taught us a lot. The most that everything and everyone has been doing is drinking kadha. Now kadha has something called as haldi. It is a very integral part. Either you have haldi and you rinse your mouth thoroughly, or else you are going to stain your teeth completely. Whitening वो है जिसके नाम टीथ का शेड्स थोड़ा फ्रॉम येलो 2 to 3 शेड्स से वाइट करते हैं. जनरली वंस यू कम टू अ डेंटल ऑफिस, हमारे पास ऐसा डेंटल शेड गाइड्स होता है जिसके अंदर हम आपका शेड पहले मैच करते हैं एंड देन वी ट्राई टू जंप 2 to 3 शेड्स वाइटर. मोस्ट ऑफ द कॉमन कॉजेज आर मेडिकेशंस. कोई मेडिकल हिस्ट्री जिसके अंदर लोग मेडिकेशंस खा रहे होते हैं, स्मोकिंग, टोबैको, अल्कोहल लाइक वाइन विच स्टेन योर टीथ, and there are so many reasons attached to it. There are two types in which आपके दांत स्टेन हो सकते हैं. एक है जो अंदर से येलो होते हैं और एक जो बाहर से स्टेन करके येलो होते हैं. जो बाहर से स्टेन येलो होते हैं जनरली एक प्रोसीजर होता है जिसे कॉल्ड इज नॉर्मल स्केलिंग ऑफ टीथ या फिर क्लीनिंग ऑफ टीथ, जिसके ना दांत डिसेंटली वाइट हो जाते हैं. पर अगर आपके दांत इनहेरेंटली येलो है तो उसको अगर आपको वाइट करना है देन यू रिक्वायर प्रोसीजर कॉल्ड एज ब्लीचिंग. ब्लीचिंग में जनरली 2 to 3 शेड्स वाइट होते हैं. Procedure is about 45 to 50 minutes, which lasts for about 8 to 10 months. It is absolutely a safe procedure. इस procedure के अंदर हम लोग जनरली एक कंपाउंड यूज़ करते हैं जिससे हम दांतों पे लगाते हैं, 40 मिनट, आधे घंटे से 40 मिनट्स रखते हैं एंड देन द टीथ बिकम्स अ शेड वाइट. जनरली लोगों का एक कंप्लेन होता है कि मेरे दांत सेंसिटिव है, एम आई अ राइट कैंडिडेट फॉर ब्लीचिंग. सो ब्लीचिंग इज अ प्रोसीजर जहाँ पे डिसेंसिटाइजिंग एजेंट्स करके हम लोग यूज़ करते हैं, जिसके अंदर अगर आपके दांत सेंसिटिव हैं तो भी हम ब्लीचिंग कर सकते हैं. इट इज़ नॉट दैट वी कैन नॉट डू, बट येस अगर कहीं पे कोई फिलिंग्स हैं या आपके दांत थोड़े इरोडेड हैं तो ब्लीचिंग बिकम्स अ लिटिल डिफिकल्ट फॉर अस ऑल्सो, बट अदरवाइज इट इज़ एन एब्सोल्युटली सेफ प्रोसीजर. सो इफ यू आस्क मी, ब्लीचिंग करना चाहिए या किसे करना चाहिए, एवरीवन इज अ राइट कैंडिडेट, स्टार्टिंग फ्रॉम द पर्सन हु इज हैविंग अ मैरिज, ब्राइड ग्रूम्स, आइडल प्रोसीजर्स, आप इन फ्रंट कैमरा जाने वाले हो, आइडल प्रोसीजर्स. इट जस्ट मेक्स अ गुड स्माइल एंड द अमाउंट ऑफ कॉन्फिडेंस दैट यू गेट इन योर स्माइल इज वे टू मच. हाउ एंड व्हेन जो घर पे प्रोसीजर्स करते हैं, इज इट सेफ और इज इट नॉट सेफ? बेकिंग सोडा लोग बहुत इस्तेमाल करते हैं. देयर आर बनाना पील्स. प्लीज डू नॉट ट्राई एनीथिंग लाइक दैट एट होम जिसके दांत ऑलरेडी इरोडेड है. जो चारकोल पुलर्स जो होते हैं, ऑयल पुलर्स जो होते हैं, ये दीज ऑल erode your teeth, the surface of your teeth, and they make you more sensitive. So please do not try any of those home methods. Ideal way to go about that teeth whitening is going to a dentist and getting your teeth shade whiter by 2 to 3 shades, which lasts for about 8 to 10 months. Of course, if you cannot go to a dentist, of course talk to your dentist. He will give you something called as a home bleach. The home bleach kit is very useful जब आपको डेंटिस्ट क्लास में इतना फ्रीक्वेंटली विजिट नहीं करना होता. It's a little safer as compared to the other methods, and dentist will tell you what is the right way to go about it. So if you like the video, please do like, share and subscribe. With over 1 lakh medical experts and the facility to teleconsult, experience clinic-like consultations on Practo.